Good evening, everybody. My name is Anushka and welcome to my channel. I have approximately 10 years of experience, and with all the experience and knowledge I have, I thought this is a perfect time for me to start my YouTube channel in order to provide information and knowledge to all those people who are interested in joining aviation. Also, for all those people who are interested in knowing कि cabin crew की life कैसी होती है. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम कैसे अप्लाई करें फॉर दिस जॉब, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी को क्राइटेरियाज पता होने चाहिए टू बिकम अ कैबिन क्रू. यू नीड टू नो डू यू फिट इन टू द क्राइटेरियाज और नॉट. सबसे पहले हम वो चेक करेंगे. चेक करने के लिए बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट है हर डिफरेंट एयरलाइन की. जिस एयरलाइन में आप इंटरेस्टेड हो वहाँ जाके करियर्स ऑप्शन के नीचे जाकर देखिए तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है इन इंडियन एविएशन, ऑल्सो इन फॉरेन एयरलाइंस, अब्रॉड की एयरलाइंस में क्या क्राइटेरियाज है, वो जानने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल वीडियो. यू कैन क्लिक हियर and you can stop this video over here, go ahead and check that out and come back. I'll be waiting for you. अब मैं in detail नहीं जाऊंगी, but I really want to talk about few points. If you're applying to become a cabin crew in Indian aviation, you need to be 18 plus. आपकी minimum height 155 या दूसरे एयरलाइंस में 157 चलती है. प्लीज़ चेक कर लेना कौन सी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. डू नॉट आस्क मी अगर हम 4'9" है 4'11" है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. नहीं, आप नहीं कर सकते, बिकॉज द मोमेंट यू एंटर फॉर योर इंटरव्यू द फर्स्ट थिंग दे डू इज चेक योर हाइट. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आप पहले चेक कर लो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में फिट होते हो, फिर जाकर मेहनत करो अपने आप के ऊपर. यू शुड हैव 12+2 education certificate. It cannot be diploma, it cannot be 10+3, it has to be 10+2 or graduate or more, but the minimum requirement is 10+2. There should be no visible tattoos and you should be really fluent in English and Hindi. I'm just going to sum it up and say you really have to be healthy because आपके health checkup होंगे. So these are the steps मैं आपको जो बता रही हूँ. These are the steps if you go through, you are not going to waste your time. कि एंड मोमेंट जाकर इंटरव्यू देकर आ गए and you were not even really fitting into the criteria. So do not do that. Your time is really precious. Your energy is even more precious, right? So आप क्राइटेरियाज के अंदर फिट आ गए हैं. सेकेंड थिंग सेकेंड, यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ. अब तक मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी आती है. इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को. इसके लिए हमें हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अगर आपकी स्किन खराब है, इफ़ यू हैव सम इश्यूज ऑन योर स्किन लाइक एक्ने और सम मार्क्स, you need to work on it. You cannot be going for the interview with uneven skin. So this is the time you'll prepare for yourself. Body language. Learn how to have a perfect body language. Once you enter for the interview, there might be thousands of eyes and you would not even know ki who is the spy. So there are people during the interview who would be just sitting here and there. You would not be noticing ki ye company ke insaan hai. They are there to just judge everybody, to just see how are the girls acting, how are they really helpful, are they bitchy, etc, etc. To prepare yourself, this is also a vast video, and if you want, I would be really happy to help you guys to know how do you prepare for a cabin crew interview. If you guys are interested, please mention in the comment section below. Now 2 steps are done. You know your criterias, you are preparing yourself. Now while you're preparing yourself, there are 2 more things that you need to do. A, prepare a bulletproof CV. Second, get yourself clicked. Now I would only recommend you to get yourself clicked if your face, your skin is perfect. That's why I ask you to prepare yourself physically before
you get yourself clicked, and then have a bulletproof CV. There are the two things that you should never forget putting in your CV. First thing first is your achievements. Second is your hobbies and your interest. First, why achievements? Because the company really want to know कि आपने क्या अचीव किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या अचीव किया, आप खुद के बारे में क्या रिप्रेजेंट करते हुए दिखा रहे हो ना. हाउ कैन यू रियली प्रेजेंट योर सेल्फ in front of the company? How good do you think about yourself? This is really what the company wants to know. Or do not fake your hobbies, because if you write your hobbies, there is 110% the company or the interviewer is going to ask you about your hobbies. If you write books, if you write you like to travel, and in reality आपने ना कोई बुक्स पढ़ी है ना आपने कहीं ट्रैवल किया है, तो एक एम्प्लॉयर के हिसाब से आई वुड नॉट वॉन्ट टू हायर समबडी हु इज़ अ लायर. सो जब आप रेज्यूमे बनाएं, मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द ट्रू फैक्ट्स and true statements rather than pleasing the company. Just work on yourself so that you can write those interests and hobbies, right? Next step is get yourself clicked. हर एयरलाइन आपको एक फुल साइज फ़ोटो और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करने के लिए ज़रूर बोलेगा. सो बिफोर यू डू दैट, बिफोर यू इवन अप्लाई, यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स रेडी विद यू. सबसे पहले आप जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचे, मेक श्योर दैट आपके बाल बंदे हो. अगर आप खुले रखे हुए हैं, देन योर ईयर्स शुड बी विजिबल एंड इट शुड हैव a white background, and do not wear white. When you're getting yourself clicked for a full length photo, make sure that you have a correct dimension. Now it is really important, आप कोई भी size में नहीं दे सकते, क्योंकि कोई airline में आप apply करते हो online, and when you do that, there is dimensions written over here and it should fit into those dimensions, वरना website accept नहीं करती है photos. For a full-length photo, you should be wearing a professional attire with, if you're a female, with a skirt. Stocking is mandatory. Your legs should be closed, not open. It should be like this. And stand straight. आपके hands and everything should be straight. From to the body, anatomical way should be like this, inwards. Stand like this, how we really stand, and just pose with a smile, and that's it. Make sure that your hair should be tied up for this photo, preferably a bun. See, for a professional photographer, मम्मी भाई बहन को मोबाइल से खींचने के लिए मत बोलना. Go for a professional environment, a studio. Get yourself clicked with a white background and you will be good to go. दो बड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लिए. थर्ड थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड अप्लाई फॉर इट. यू वुड गेट दैट रिसीट, उससे भी काम चल जाएगा. बट आई वुड रियली सजेस्ट यू टू हैव एंड अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट बिफोर यू अप्लाई फॉर द जॉब. ये कैसे जाने भाई, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा वेबसाइट, क्या? डोंट वरी, मैंने सारे लिंक्स नीचे दिए हैं. डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एयरलाइंस करियर पेज. आपको कुछ नहीं करना है. एवरी वीक ये वीडियो में आई है, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए. गो डाउन एवरी वीक, गो अहेड एंड चेक कहाँ एप्लीकेशन आया है, कहाँ जॉब वैकेंसीज आई है, क्या कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आप सब रेडी, यू आर ऑल रेडी. गो अहेड एंड जस्ट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, क्या नहीं करना है, उसके बारे में आई हैव अनदर वीडियो. ये वीडियो में मैंने तो आपको बताया नहीं कि आपको ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना है, राइट? क्योंकि नेसेसरी नहीं है. अब आप बोलोगे दीदी आपने सब तो बता दिया, बट प्रिपेयर कैसे करें? यू नो कि आपने तो ये बताया नहीं कि कहाँ से क्लासेस कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं. यू ऑल जस्ट नीड टू बी यू. ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे
जो आपको नहीं आएंगे. All the questions would be about you. आपने जो भी CV में लिखा है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड नथिंग एल्स. आपको कोई भी एविएशन टर्मिनोलॉजी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे. सो डोंट वरी. It is going to be about your life experience, your likes and dislikes, strengths and weaknesses, and that's it. अब ट्रेनिंग स्कूल की बात करें, so you know that I always talk about this on my Instagram handle, that is Airline Didi. बट अब इसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाना चाहती हूँ, फुल फ्लेज वीडियो. बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगी कि नो, इट इज नॉट नेसेसरी. मत ज्वाइन करना कृपया करके. मम्मी पापा के पैसे वेस्ट मत करना कोई भी क्लासेस ज्वाइन करके. आई एम हियर फॉर यू. पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम हियर टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. बस I know you are going to regret putting those lakhs and lakhs of money on those trainings. No. That's it, guys. I hope this video was really informative for you all. I tried my best to simplify it because it's a simple process. Pata nahi log. So I hope you guys really found this video informative, simple, and I hope you would really go ahead and apply for it. All the best, guys. God bless you, and may you just be what you really have to, may you really become the best version of yourself. Bye.